Now our next topic is electric flux. What is electric flux? Electric flux is denoted by symbol phi. This is phi. Okay. It represents the type of energy of electric field lines links with the surface. Electric flux represent the type of energy of electric field lines links with the surface, or we can say that it is the number of electric field lines crossing any area. Okay, it is the number of electric field lines crossing any area. Suppose this is any area S. How many electric field lines are crossing this area? Electric field lines are crossing this area is known as electric flux. Okay, how many electric field lines, or we can say that how many the type of energy of electric field lines links with that surface. Okay, it is the scalar product of E and A. A is area vector and E is electric field. जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए. ओके, it is represented by the scalar product of E and area vector. E and area. One thing is to remember here that area is also always a vector quantity, not a scalar quantity. Okay, suppose this is area S. Here its direction is in upward direction, perpendicular to the surface. अब perpendicular दो हो सकती हैं इस surface पे, upward and downward, ऊपर की साइड और नीचे की साइड. लेकिन ऑलवेज एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, जो आपको रिमेंबर रखना है. वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड टुवर्ड्स आवर आई साइट. ओके, टुवर्ड्स आवर आई साइट. सपोज दिस इज एन एरिया एलिमेंट. ओके, हेयर area vector direction is in this point to this point in upward direction. Okay, not in downward direction. एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा टुवर्ड्स आवर आई साइट एंड परपेंडिकुलर टू दी सरफेस. क्लियर? नाउ electric flux phi is also always the scalar product of E and A. Okay, when we open this dot product, scalar product is also known as dot product. E vector into area vector. E is also a vector quantity electric field and area is also a vector quantity. When we open this E A cos theta, whenever we remove dot product, then there will be cos theta, and whenever we remove cross product, there will be sin theta. Okay, E A cos theta phi. Okay, tell me one thing. Suppose this is a surface. Okay, held in this position, and electric field direction is in, suppose in upward position there is positive charge and in downward position there is negative charge. Electric field direction is plus to minus, upper to lower. Or electric flux, we know that the number of field lines crossing this area element. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपर टू लोअर क्रॉस कर रही है. ओके, और एरिया इज इन दिस पोजिशन. सपोज हेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया आर 50.
Okay, when here area vector, direction of this area vector is in upward direction towards our eyesight, and electric field in downward direction, or electric field can be downward to upward. So the angle between the area vector and electric field can be 0 or 180. Okay, suppose this is our area element. Okay, and electric field is in positive to negative, upward to downward. Okay, and here area element, this is area element, and the area vector direction is also in upward direction. This is in, यहाँ से क्लियरली आपको होगा, सपोज दिस इज एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पोजिशन. ओके, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑल्सो इन upward direction, then angle will be 180. If electric field in this position downward to upward, then angle of area vector with electric field, this is our electric field direction and this is our area direction. Both are in 0 angle and both are in 180 degree. Okay, so here the angle 0, pi and 2 pi, for all these values of cos value is 1. यहाँ पे हमने cos डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट क्यों नहीं लिया? डॉट प्रोडक्ट का मेन रीज़न यही है कि कोस थीटा, यहाँ पे कोस 0 पाई 2 पाई इन सब पे वैल्यू 1 होती है, लेकिन साइन 0 पाई 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ओके, जब एरिया वेक्टर की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होगी तो एंगल 0, तो यहाँ पे कोस 0 1 मीन्स फाई मैक्सिमम. सो हेयर वी हैव टेकन E dot A. Okay, and the formula of electric flux is E dot A, scalar product of electric field and area vector, and theta is the angle between electric field and area. Okay, SI unit of flux E dot A, SI unit of electric field, we know that E is equal to F over Q, Newton per coulomb, into में area into meter square. Okay, this is the most important topic of this chapter. Now next point is suppose this is the direction of electric field lines in this direction. Here suppose this is plus q charge and this is minus q. Electric field lines are in this direction. Okay, and area vector is also in this position. Okay, so area vector की यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, जहाँ पे मैंने क्रॉस मार्क किया है, एरिया कैप लिखा है, तो perpendicular to the surface and towards our eyesight. We are observing in the direction of E. Here both A and E and A vector are in the same direction. So angle between them is A parallel to E. Angle between them is 0. So put E A cos 0. E A cos 0 क्या होता है, 1 E dot A. हमारे पास वैल्यू आ गई जब E वेक्टर और एरिया वेक्टर क्या हो, दोनों सेम डायरेक्शन में हो. ओके, जब क्या हो, हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, इन्वर्स पोजीशन में कर देते हैं. ई की डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो ई ए की क्या हो जाएगी, इस साइड हो जाएगी. ओके, सो एंगल इज 180 व्हेन वी रिवर्स द ऑब्जेक्ट, देन एंगल विल बी 180 एंड फाई विल बी माइनस ई डॉट ए. ओके, नाउ दिस इज वन मोर एग्जाम्पल. Suppose electric field lines are in this direction and area is now in this position. Now E vector is in this direction and area vector is in perpendicular to the surface towards our eyesight in upward direction. E and A both are perpendicular. Okay, this is our area
E and A both are perpendicular. So theta E will be 90 degree. Then phi will be E A cos theta, cos 90. Phi will be 0. Okay. Now if electric field lines are in this direction and area will be in this direction, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी परपेंडिकुलर हो, एरिया भी इधर हो, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? सेम. देन कोस थीटा कैन बी 0 और 180. देन हेयर इन दिस पोजिशन phi will be maximum and in this position phi will be minimum. Okay, this is all about the electric flux, and this concept is also used in Gauss law and its application. Okay, this is the most important topics, Gauss law and its application and electric flux. Okay, thank you. Now one more point regarding the electric flux is, example is given here. Here first figure, this is a closed figure. Here the number of electric field lines entering in the any surface is equal to number of electric field lines leaving that surface. This is the area element in which the number of electric field lines entering or leaving the surface is same. जितनी सरफेस के अंदर एंटर हो रही हैं उतनी ही लीव कर रही हैं, देन देयर विल बी नो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि हमें पता है फाई क्या होता है, ई डॉट ए. इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, ज़ीरो वैल्यू है, तो फाई भी क्या हो जाएगा हमारे पास? ज़ीरो. ओके, सपोज दिस इज ए सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी इसके अंदर जा रही हैं उतनी ही बाहर निकल रही हैं नीचे से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे? ज़ीरो. और देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑल्सो विल बी ज़ीरो. ओके, इन दिस फिगर इफ इन ए क्लोज बॉडी देयर इज पॉजिटिव चार्ज इनसाइड and electric field lines are in outward direction, positive to negative. We know that अगर ये point charge plus q है, we know that the electric field lines of a plus charge in positive to negative. Then in this case flux will be also greater than 0 and in outward direction. जिस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है फ्लक्स की डायरेक्शन भी सेम होती है. Here this is negative charge, electric field lines are in positive to negative inside direction. So here flux is also less than 0 and in same direction of electric field inside. Okay, thank you.